फर्स्ट मॉड्यूल न्यूमेरिकल्स। अभी डायोड का न्यूमेरिकल करेंगे। Also from the PYQ questions. Okay. ओके ओके डायोड करिया फर्स्ट ठीक अछि। फिर फर्स्ट क्वेश्चन I provide from the PYQs. Okay, just wait 1 minute. Okay, there is a resistor R1 into 10 volt. Now we have to calculate the V output here. Okay, अभी यहाँ पे हम V output calculate करना है, क्वेश्चन में पूछा है। So अभी एक और रेजिस्टर है लाइक से R2 that is 3 kilo ohm. This is 2 kilo ohm. Okay, let's say here is a minus 5 volt. So this is a question. Now simple we have to apply the अभी नोड एनालिसिस करेंगे तो देखो कैसे होता है। अभी हमें करंट कैलकुलेट करना है, दैट इज आई। लेट्स से करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज आई। सो यहाँ 10 वोल्ट है, सो राइट हियर 10 वोल्ट। देयर शुड बी अ डायोड। ओके, लेट्स से इट्स अ सिलिकॉन डायोड। ओके, हियर इज द सिलिकॉन डायोड। सो करंट इज 10 वोल्ट minus it is silicon diode means what 0.7. for germanium it is 0.3 volt. okay, this is the most important. अभी ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। so then we have to calculate 10 volt minus ये 0.7 volt है एंड ये इधर है -5 volt। अगर इससे हम सीधा कर लेंगे तो ये एक ही सीरीज में होगा सब। सो 10 वोल्ट माइनस अभी इसके थ्रू जो वोल्टेज आ रहा है, ओके, ये क्या है 0.7 वोल्ट एंड अगेन -5 वोल्ट इधर है तो माइनस इंटू -5 वोल्ट। अगर यहाँ प्लस होगा तो -5 वोल्ट डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अभी सिर्फ वोल्टेज लिखा है, अभी करंट के थ्रू भी कुछ वोल्टेज, अभी रजिस्टर है, रजिस्टर भी कुछ वोल्टेज खाता होगा। जैसे अभी हम उस वोल्टेज को लिखेंगे। सो वी नो V इक्वल टू आई आर। सो ओके, by multiplying voltage across the resistor is what I into R. So let's say minus, इससे साथ ही minus 2 into let's say I. okay, minus this is 3 into I. okay, अभी करंट फाइंड करना है। 10 वोल्ट minus 0.7 plus 5 it is 15 एंड ये होगा 15 minus 0.7 volt minus 2I minus 3I, it means 5I. ओके, अब सी, अब 15 से 0.7 जाता क्या 14.3 माइनस 5I इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द फाइंडिंग करंट। नाउ सी 14.3 equal to 5I, therefore I equal to value what 14.3 by 5. Here we found the value of I
ओके, अभी आई का वैल्यू फाइंड किया हमने। ओके, नाउ सी, हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, हाउ कैन आई नो? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? ठीक है, ठीक, समझ गया। अभी देखो, अभी हम करंट का वैल्यू पता किए बाय कैलकुलेटर, वी कैन फाइंड द वैल्यू आल्सो। सी 1 सेकेंड, 14.3 5 is 2.86, wait, 2.86, it's 2.86. See, the total resistors are of kilo ohm, so here into 10 to the power 3, that is 2.86 milliampere. ओके, अभी यूनिट लिखना मत भूल जाना एग्जाम में, ठीक है? नाउ सी, अभी क्या करना है, अभी हमें इधर से I1 फाइंड करना है। तो ठीक है, लेट्स से दिस इज I1 करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड दिस थ्रू इज I2। ओके, अभी देखो, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर इज I1, सो रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो वी नो द वैल्यू ऑफ I, दैट इज दिस, एंड रजिस्टर V इक्वल टू व्हाट, वोल्टेज फाइंड करना है, V इक्वल टू IR, सो करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस इज व्हाट, 2.86 milliampere into 2 kilo ohm. Kilo means what? 10 to the power minus 3. Okay, let's see, I will write it properly here. 2.86 milli means 10 to the power 3 into 2 into 10 to the power minus 3. The minus 3 and the plus 3 cancels, that is into, which becomes 5.72 volt. This is the current flowing, voltage across this resistor. Okay, and also here there is a resistor, so by this formula you can also calculate the current flowing through the resistor also. Let's say the resistor is of through 3 kilo ohm. Okay, and I into R means 3 into I, that is 2.86 milliampere, that is 3 into 10 to the power minus 3. If there is kilo, then 10 to the power minus 3 always there. If there is milli, then 2.86 into 10 to the power 3 always there. Then 3 cancels, then 3 into 2.86, that becomes what, 3 multiplied by 2.86 is equals to 8.58. Okay, the volt we found V1 and V2, that is V1 is what, 5.72 volt, V2 is 8.58 volt. Okay, this is the answers. इस टाइप क्वेश्चन एक आएगा, और एक डेरिवेशन या फिर एफिशिएंसी एंड रिपल फैक्टर निकालने को एक आएगा क्वेश्चन, या फिर आईडीसी और आईएससी, दैट इज सेम, और आईआरएमएस, हाफ वेव का, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों का पूछेगा। ठीक है, अभी एक और न्यूमेरिकल करेंगे हम।
ठीक है, आई एम ओपनिंग द क्वेश्चन. ओके, see here. यस, सिलिकॉन अगर या फिर जर्मेनियम कुछ भी दिया होगा तो अभी ये डायोड होगा तो इधर लिखा होगा सिलिकॉन. ओके, अगर दिया होगा तो यहाँ पर जर्मेनियम भी लिखा होगा. जो देगा उसका वैल्यू हम पुट करेंगे. अभी सिलिकॉन दिया है तो उसका है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट. एनदर अगर किसी सर्किट पे यहाँ हम दे रहे हैं लेट्स से 0.5 वोल्ट. ओके, and here is attached a silicon. Okay, then the diode will not on, that is in off state only. Okay, क्योंकि अगर इतना करंट देंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, इसका कैपेसिटी ज़्यादा है, 0.7 वोल्ट है. ओके, ये याद रखना है. ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. वी आर गोइंग क्वेश्चन नंबर 2. ओके, is a circuit called five volt plus and minus. Is a silicon diode. सिलिकॉन डायोड, दो सिलिकॉन डायोड कनेक्ट हुए हैं. ओके, नाउ सी हियर इज ए रेजिस्टर 1 किलो ओम. अभी इतना है, अभी करंट फ्लो होगा I1. ओके, वी नो द वैल्यू 5 वोल्ट माइनस I1 इक्वल, मैश एनालिसिस करना है. 5 वोल्ट माइनस 0.7 माइनस 0.3. ये जर्मेनियम डायोड है. ओके, अभी सिलिकॉन का वैल्यू पता है 0.7, जर्मेनियम का वैल्यू है 0.3. ओके, अभी हम इसका वैल्यू पुट किए हैं इधर. ओके, बाय I equal to V by R. Okay, here is the resistance 1 kilo ohm. I equal to V by R. We just put the value which came 4 volt by 1 kilo ohm. That is which came 4 milliampere. Okay, current flowing through this is 4 milliampere. Now what is asked? Diode voltage. Okay, voltage flowing through the diode is VD equal to V equal to I into R. That is I is 4 milliampere into R. Resistance is what? 1 kilo ohm. That is 4 into 10 to the power 3 into 10, 1 into 10 to the power minus 3. Minus the 10 cancels, 4 volt. The answer is 4 volt. Okay. Now next question. We are going to next question. Third question.
The circuit question we will solve like that. This is the important questions. The question है now 8 volt connect हुआ है इधर. That here should be a दोनों सिलिकॉन है. तो ये कनेक्ट हुआ है ग्राउंड को. अब ऐसा सर्किट है. ओके. और इधर है 3K silicon. Now we have to find the V naught. Okay, V output. ଏବେ ଦୁସୁଛି ଠିକ ଅଛି. ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଆଶୁତୋଷ. Hello. Is it okay now? Okay, let's go solve it. Okay, mid-stem diode questions. Okay. After that, we'll solve it. So here is the 8 volt minus. अभी इधर है कितना 0.7 वोल्ट. डायोड लगा है मतलब सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट है. ठीक है. Now upon here is the resistance 3 kilo ohm. Okay, 3 kilo ohm. Now see how much it became. 7.3 by 3, that is 2.43 milliampere. This is the current flowing through this. Okay. Now it is asked V naught from this node. This is V naught means V output. This node, how much current is there? 0.7 volt. So the V output will be 0.7 volt. But the current flowing through the resistance is this much. Okay. Now we are going to next question. After that we will solve the mid-stem. Let's see another question. It is a question. इधर एक जर्मेनियम डायोड लगा है और इधर एक सिलिकॉन डायोड है. सो अभी करंट फ्लोइंग थ्रू ये और ये है 8 वोल्ट. ओके. अभी इसके फ्लोइंग थ्रू में करंट कितना है हमें देखना है. सो सी हियर इज 16 वोल्ट. फर्स्ट यू हैव टू राइट द वोल्टेजेस. ओके. अभी जितना वोल्ट दिया है अभी 16 वोल्ट इधर से जा रहा है तो 16 वोल्ट. अभी इधर कितना है 8 वोल्ट तो माइनस इंटू -8. अभी कितना हुआ. Then equal to what became 24. Okay, now the total I ये है मेन वोल्टेज. ओके. अभी हम टोटल करंट कैलकुलेट करेंगे. I इक्वल टू 24, ये 24 टोटल 16 and 8 24 माइनस 0.3, ये है कितना माइनस 0.7. ओके.
अभी ये 0.3 एंड 0.7 ये दोनों का कैलकुलेट करना है हमें। We'll see it. Now see, अभी by how much resistance is there total? 5 plus 2 is 7. Okay, 7 kilo ohm. That is the answer. 0.3 plus 1 24 23 by 7, that is 23 by 7, it is what? 3.28 3.285 milliampere. Okay, now see, ये है करंट, इसके थ्रू फ्लोइंग जो हो रहा है करंट। अभी हमें आई का पता चल गया है, ये एक प्रोसेस है आई निकालने का। ठीक है, अभी एक और प्रोसेस बताऊंगा। देखो, सेकेंड मेथड इज टोटल करंट वी हैव टू कैलकुलेट 16 माइनस, अभी कितना है 0.3 माइनस, अभी 2 रजिस्टर लगा है, 2 इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दैट इज लेट्स से आई, सो 2i। ओके, देन माइनस, अभी डायोड है कितना 0.7 वोल्ट का। ओके, देन माइनस 5i minus into minus 8. Now calculate it, what it becomes equal to 0. Okay, it is the equation form. We will calculate what it became 23 1 1 8 24, अभी 16 8 8 प्लस 8 हो गया 24, अभी 0.3 एंड 0.7 1 होता है, तो 24 माइनस 1 इक्वल टू 23। ओके, समझा? देन अभी लिखना है करंट कितना है 0.2 and 5 7i equal to 23 equal to 7i, therefore I equal to what 23 by 7 equal to, here we calculated it. ओके, अभी इधर से करने से ही वही आंसर आता है, इस तरीके से भी करने से वही आंसर आता है। ठीक है, अभी किस तरह से भी करना वो आपके ऊपर मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर इस प्रोसेस से करते हैं तो बहुत इजी है, सिर्फ लाइन में लिखते जाना है। अभी 16 वोल्ट है, पहले वोल्ट लिखने उसके बाद माइनस करना है। अभी ये लिख लिया, माइनस जर्मानियम का 0.3 माइनस 2 इंटू आई माइनस 0.7 माइनस 5 इंटू आई माइनस इंटू माइनस 8 वोल्ट। अगर प्लस होगा तो माइनस 8 डायरेक्ट डाल सकते हैं। ओके, वही सिंपल। वैसे इधर आया आंसर कितना 3.285 मिली एम्पियर। अभी करंट हमें पता चल गया है, अभी भी आउटपुट निकालना है। ओके, सो द भी आउटपुट शुड बी, अभी देखो इधर कितना है, अभी इस वजह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स से इट इज 16 for this diode. Okay, let's say this is 16 minus 0.3 for germanium. We have to calculate V naught na, so we will follow this path. এই রাস্তারে মানে এই ওয়ে দিয়ে আমি ফাইন্ড করিয়া কারেন্ট হেলা দেখে রে, মানে এডি 16 ভোল্ট ଅଛି, তো এডি জর্মানিয়ম ডায়োড লাগিছে, তো 16 minus 0.3 কरू, তারপর রেজিস্ট্যান্স রে যেতি কারেন্ট যাচ্ছে ছাড়ো ক্যালকুলেট কरू হেলা রে। সো এটা 2 ଅଛି তো 2 के, तो 2 ଏବେ ମାଇନସ୍ କରୁ ହେଲା, 2 into i, i ବେଲେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ଥ୍ରୁ ଇଟ୍ ହେଲା। ଆଇଟା ଆମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଏଇଠି କାଢ଼ିଲେ ଏବେ କେତେ 3.285 3.285 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ v ନଟ୍ ରେ ହେଲା, ଯାହା ଆନ୍ସର ଆଇବ ହେଲା। ଓକେ, ଏବେ ଯଦି ତତେ ଏ ୱେରେ ଭଲ ଲାଗୁନି କାଢ଼ିବାକୁ ତ ତୁ ଏ ୱେରେ ବି ଯାଇପାରିବୁ। ସେଇଠି କ'ଣ ଲେଖୁ -8 ପ୍ଲସ୍ ଏତିକି ଇଣ୍ଟୁ ଆଇ ମାଇନସ୍ ଏତିକି, ତ ତୋର ଆନ୍ସର ଆଇବ ଏଇଠି ଏତିକି ହେଲା। सो टोटल लास्ट v नॉट आसियो आर वैल्यूडा। ओके, कैलकुलेट कर केता होछ 16 minus 0.3 becomes 15.7। अभी 15.7 से ये माइनस करना है, 2 इंटू 3.285 इक्वल टू 6.57। अभी 15
point something, let's say 2 minus 15.7 से 15.7 से हम माइनस करना है 6.2. ओके, व्हाट द आंसर? 9.5. 9.5. ओके, 9.5 यह हो गया आंसर हमारा बी आउटपुट. ओके, दिस इज द आंसर. बुझले बी आउटपुट? हेलो, have you understand how the V output is calculated? This is a circuit. Here is the 16 volt. You have to just put the values accordingly this to this in serially. Remove the V naught. Let's say there is no V naught. This is the simple circuit. ଶୁଣେ କହୁଛି ଦେଖେ ରେ, ଏଠି 16 ଭୋଲ୍ଟ ଅଛି, ଜର୍ମାନିୟମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 0.7. 16 ମାଇନସ୍ 0.7 ସବୁ ମାଇନସ୍ କରି କରି ନଉ, ମାଇନସ୍ ଏବେ 2 ଏଠି ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟର, तो V इक्वल टू कौन फॉर्मूला? V इक्वल टू IR. ओके, सो I into R, current is value is this multiplied by 2. okay, then minus 0.7 minus 5 into this minus this. okay, यदि गला आंसर पड़िया तापर V आउटपुट मींस आ दे जति करंट अछि 80 नोट टा, तो एपन नै करंट भी कैलकुलेट करि हबो, एपन नै भी V नोट माने वोल्टेज, एपड वोल्टेज कैलकुलेट करि हबो, एपड भी वोल्टेज कैलकुलेट करि हबो. So from this region we have to calculate this voltage. okay, 16 minus germanium value is 0.3 minus 2 into 3.285 volt. okay, so the answer becomes this 9.5 something. okay, approximately this value is the answer. Now we are going to solve op-amp. Let's say which topic we are going to numerical. Let's say we will solve that topic. अभी कमेंट करो कौन से टॉपिक पे न्यूमेरिकल करेंगे हम. बुलियन अलजेब्रा, बीजेटी, बुलियन अलजेब्रा लास्ट में करेंगे, अभी ये खत्म होने दो. ठीक है, अभी डायोड का न्यूमेरिकल हम कंप्लीट किए, अभी जाएंगे बीजेटी. एवरीवन विल लर्न बीजेटी. ओके 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 ओके, मोरेक्स फ्री फायर. ओके, बीजेटी. ओके आशुतोष, बीजेटी बीजेटी. ओके, BJT. So BJT have 3 important questions, that is PNP, transistor operation, okay, then the second one is common base, common collector and common emitter configuration. Third one is NPN, transistor operation. okay, अभी सी लास्ट सेमेस्टर दे ये आया था, so most chance है this semester this will become. okay, now we'll start from theory to numerical. okay, in BJT there is no question after this the theory, there is one theory question will compulsory come. okay, so we'll see this PNP transistor. okay, let's say we know that transistor have 3 terminals. I am saying for PNP. okay,
ऐसे what is this? This is known as emitter and this is base and this is collector. Transistor have three parts. Okay, emitter, base and collector. So see now, हमेशा कोई भी पी टाइप हो या एन टाइप पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, वो उसका emitter बेस जंक्शन मतलब दिस साइड लेफ्ट साइड ऑलवेज विल फॉरवर्ड बाइस. फॉरवर्ड बाइस मीन्स अगर यहाँ पे एनपीएन होगा तो इधर नेगेटिव लगाना है और इधर पॉजिटिव. यहाँ पीएनपी है तो इधर हम लगाएंगे पॉजिटिव, हियर इज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेट्स से भी. बट इन कलेक्टर वी हैव टू ऑलवेज रिवर्स बाइस इट. ओके, अभी हमें इसे रिवर्स बाइस करना है. पी टाइप को नेगेटिव लगाएंगे, एन टाइप को पॉजिटिव. ओके, लेट्स से इट इज आल्सो बी. नाउ सी, पीएनपी ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है. ओके ठीक है, अभी समझना है, उसे थ्योरी के आकार में लिखना है. ओके ओके, अभी सी, विल आई एक्सप्लेन इट इन ओडिया? हेलो एवरीवन, will I explain it in Odia? If yes, then type yes. Okay, I am explaining it in Odia. Okay, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है. ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ପଜିଟିଭ ଟର୍ମିନାଲ ଏଣ୍ଡ ପି ଟାଇପ କୁ କନେକ୍ଟ ଅଛି. दैट मीन्स पॉजिटिव. we know the p type semiconductor have 1 minute. सॉरी, ଏବେ ଏଠି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ ଅଛି. ସो ଏବେ पॉजिटिव टर्मिनाल पी टाइप को कनेक्ट अछि. we know p टाइप माने कोन, सबदिने होल्स, होल्स माने पॉजिटिव चार्ज कैरियर. ओके, एंड एटा भी पॉजिटिव. सो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव सबदिने रिपेल करिए. ओके, पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करिए. सो एबे देखो, एमिटर अच्छी, एमिटर रे पी टाइप लगी, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल जदि लागियो तो एट जो होल जाग थिबे कौन एबे को डायरेक्शन मूव करिए. एबे ए डायरेक्शन रे जाउची जदि करंट पॉजिटिव रू तो होल जाग ए डायरेक्शन रे मूव करिए. ओके, एबे पी टाइप रो होल जाग ए डायरेक्शन रे मूव कले. सो आमे जानछनी एडा गोटे पीएन जंक्शन डायोड, पी आ एन अछि एटी. एबे पीएनपी ट्रांजिस्टर ता दीटा पीएन जंक्शन डायोड बनउछि ना, पी टाइप एन टाइप एंड पी एन टाइप. ओके, okay, let's say don't focus on the comment section. okay, see ଏବେ ଦେଖ ହୋଲ ଯାକ ଏ ସାଇड ट्रांसफर हेले तो एटा डिप्लेशन लेयर गोटे थाउची सबुदिने. तो जदि होल जाक ए साइड ट्रांसफर हेबे तो डिप्लेशन लेयर टा छोट हो जीवो. सो ता जगु कोन हबो, होल जाक एन टाइप जदि इलेक्ट्रॉन अछि, होल जाक इलेक्ट्रॉन आडे जंप करी. ओके, सो जदि जंप कले जेतळ इलेक्ट्रॉन आउ चार्ज जेतळ फ्लो होबे सेतळ कोन हबो, करंट फ्लो होबो. ओके, so here there will be a current flow, that is IE, emitter current. Okay, the next is now see N. we know अभी बेस जंक्शन जो होगा उसमें सिर्फ 2 to 5% ही इलेक्ट्रॉन से ही कंबाइन हो पाएगा, कोई भी होल आएगा तो. ओके, एबे जदि 8 to 100 टा होल जीवो एपटे तो एडी ओनली दीटा होल कि दीटा रु 5टा होल आगा इलेक्ट्रॉन सहित कनेक्ट हबो, आउ बाकी 95 एपटे पळी आसीयो. कम पाई ना बेस सबुदिने लाइटली डॉप हेइ थाउछ, माने डॉपिंग, हमर जो डॉपिंग अछि बेस लाइटली डॉपिंग हेइ थाउछ, किंतु इमिटर अधिक हेइ थाउछ, कलेक्टर भी मॉडरेट हेइ थाउछ. हेला प्राय सेम, बट बेस बहुत कम हेइ थाए, 2 to 5%. सो एबे करंट फ्लो होची, देन होल एटी आसला इलेक्ट्रॉन सहित कंबाइन हबो. एटी इलेक्ट्रॉन अछि. ओके, इलेक्ट्रॉन्स होल आसला एटी कंबाइन हला, ओनली 2 to 5% होल कंबाइन हबो, आ बाकी होल एपट जंप कर दियो, बाकी 95% होल. ओके, एटी गोटे करंट फ्लो हबो, दैट इज IB, बेस करंट.
देन 80 आसला 80 एबे कोन इलेक्ट्रॉन अछि सॉरी एबे होल अछि आ एटी पी टाइप अछि माने होल ता कोन ए डायरेक्शन रे मूव करिए माने रिपेल करिए आउ थरे तो एई जोडे करंट फ्लो होबो दैट इज आईसी एबे सिंपली बुझो जे अर्थ सुनो एडो हम वोल्टेज देले एपटे वोल्टेज गला पी टाइप को लागिला एबे पॉजिटिव को पी टाइप माने कोन रिपेल करिए सेम चार्ज रिपेल्स टू ईच अदर सो रिपेल करले तो एपटे चार्ज ठेली गिरी एपटे आसला एन को देन एन रे कोन होला अल्प कंबाइन होबो 2 to 5% कंबाइन एन दा कम डोपिंग कराय था लेस डोपिंग ओके लेस डोपिंग कराय था सो आ बाकी बळका जा एपटे पळी आसी तो एपटे आले कोन बाउथर पी टाइप को होल को आउथर रिपल्सन होबो से माने एपटे जी सो ट्राई को सब दिन सर्कल ए टाइप कंप्लीट होबो ओके ए टाइप चलियो ओके इटा आई थिंक 50% 60% चांस अछि इटा आसियो ओके नाउ सी विल गो फॉर कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सेकंड अभी ट्रांजिस्टर देखो ये अभी है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ओके अब ये है हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन will you continue okay अभी दिस कॉन्फ़िगरेशन इज ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर हमेशा याद रखना पीसी मतलब क्या है पीएनपी ट्रांजिस्टर में कलेक्टर के साइड करंट आएगा हमेशा इमीटर टू कलेक्टर ही करंट फ्लो नहीं होगा फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर एमीटर टू कलेक्टर में करंट आएगा बट इन एनपीएन इट विल फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर रिमेंबर इट ओके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएनपी में एमीटर से कलेक्टर को करंट जाएगा पीएनपी में एमीटर से कलेक्टर इट मींस पीसी पीएनपी में कलेक्टर को करंट जाएगा ठीक है ये याद रखो देन नेक्स्ट है हमारा ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है पीएनपी का सो लेट्स सी कॉमन बेस मींस व्हाट बेस कॉमन होगा मतलब ये जो बेस कॉन्फ़िगरेशन है ये जो बेस का अटैचमेंट है ये इन दोनों के साथ अटैच रहेगा एक इमीटर को एक कलेक्टर को अभी सी हम बनाएंगे कॉमन कलेक्टर सो लेट्स से दिस कलेक्टर we will just turn the transistor this collector this is base this is emitter ओके अभी ये कॉमन हो जाएगा इधर से करंट आएगा इधर से जाएगा मतलब ये क्या है कलेक्टर अभी कॉमन हो गया इट मींस ये होगा इनपुट आपका ये होगा आउटपुट आपका ठीक है ये अगर एनपीएन सॉरी पीएनपी हुआ सो क्या बताए पीसी मींस एमिटर टू कलेक्टर करंट जाएगा सो दिस साइड आएगा ठीक है कलेक्टर दिस डायरेक्शन ओके एमिटर से कलेक्टर को हमेशा करंट फ्लो होगा ठीक है इस तरह से ही हमें कॉमन एमिटर का हो गया कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर ऐसे ही करना है ठीक है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन नाउ सी we'll go to next that is numerical portion of transistor let's say the picture of a transistor is like that here is the thing okay emitter base collector npn and pnp these two okay we'll start a numerical just 1 minute this is a question for BJT okay for BJT numerical we are consider this for BJT numericals there is a question is called for BJT and this is a problem this is called the common base
one question is from transistor. Let's say the question is like that. So we'll do it in next way. Question. Let's say then this is, let's say R2, this is base. Okay, so we have this question configuration. This is 12 volt given, and this is 4.7 volt. Okay, 4.7 kilo ohm, sorry, 4.7. This is the questions. Okay, so the answer will solve if there is a current flow. Okay, the IC here we have to give IC. Here is a 5 volt. Okay, given, then IC, collector current.